नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर स्काई और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वॉक थ्रू में जिसका हमें पोकेमॉन अनबाउंड फुल वर्जन आ चुका है, वर्जन 1.0.1। तो आज हम यही से शुरुआत करेंगे। वुड यू लाइक टू स्किप सर्टन कट सीन ड्यूरिंग गेम प्ले? नो, दिस ऑप्शन मे बी चेंज एट एनी पॉइंट यूजिंग द ऑप्शन मेनू। ओके, लॉन्ग एगो the Borrius region was engulfed by a great war with the Kalos region. It was a brutal war, one which lasted many years. During that time, Kalos managed to seize the upper hand. Oh, मैगमॉर्टर से लड़ रहा है। ये कैसा है? गोलर का एग्रॉन से। ओके, राइपेरियर टॉक्सिक रॉक से, तो राइपेरियर जीतेगा। स्टीलिक्स और सैलेमन ऐसा लग रहा है कि दोनों डर गए, भाग रहे इधर उधर, या टैकल यूज़ कर रहे हैं और वापस पीछे जा रहे हैं। और ड्रापियन और इलेक्ट्रीफायर। ओके, कॉम्बिनेशन अच्छा है, मगर मैगमॉर्टर वर्सेस मैगमॉर्टर ये मुझे समझ में नहीं आया कॉम्बिनेशन। ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफीट, द बोरियन किंग समन अ डार्क फोर्स टू हेल्प टर्न द टाइड्स ऑफ बैटल। ओह, हुपा का वो क्या बोलते हैं उसको, अनबाउंड फॉर्म ना, ऐसा कुछ तो है उसका, अनबाउंड फॉर्म। द कैलोसियन आर्मीज एडवांटेज वॉज लॉस्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। एज सुन एज it entered the battlefield, the Dark Force used its power to create portals and transport the invading army back to Kalos. Okay. With the foreign army gone, the war seemed at an end for Borrius. Well, actually मुझे लगता है ना, एग्रॉन और सैलेमेंस कैलोस के पास होना चाहिए था, क्योंकि उनको मेगा एवोल्यूशन और कैलोस में मेगा एवोल्यूशन इन्वेंट हुआ था। मतलब इन्वेंट हुआ था मीन्स हम लोग को एनिमे में पता चला था ऐसा। ओके, बोरियस, however, their king, overcome by his lust for power, sent the Borrian army through the portals as well. ओहो, फिर से चालू होगा। ये कौन भाग रहा है अभी? अच्छा, फ्लोएट। The war continued to rage in Kalos for several years. वो तो नहीं ना, वो अगर आपको मालूम होगा, वो पोकेमॉन जनरेशन की सीरीज आई थी, 17 या 18 एपिसोड कुछ तो उसके आए थे। उसके लास्ट एपिसोड में ऐसा ही कुछ था, वो फ्लोएट का, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आदमी कुछ तो ऐसा, वो मशीन कुछ क्या, वॉर मशीन ऐसा कुछ तो था उसका, वो इमॉर्टल वगैरह वगैरह कुछ तो था वो उसमें। वो कैलोस के चैंपियन से बैटल करता है, फिर उसको फ्लूइड मिलती है उसकी वापस, ऐसा कुछ तो है वो। द वॉर कंटिन्यू टू रेज इन कैलोस फॉर सेवरल ईयर्स. Many more men and Pokemon were conscripted to fight and inevitably met their end on the battlefield. One such Pokemon having been a dear friend of the Kalosian king. Overcome with grief, the king built a device to restore its life, granting himself immortality in the process. हाँ, मुझे लगा ही था. But this traumatic event left him scarred and filled with anger, unable to forgive the world that had hurt his precious Pokemon. He turned his machine into a giant weapon, the ultimate. हाँ, ultimate weapon. उसका एपिसोड का नाम भी शायद ultimate weapon था. The ultimate weapon. The king became a bringer of destruction that ended the war. Oh ho ho. With the war over, that little remained of the Borrian army returned home. The king's Pokemon left him, and the battlefield became silent. Yet peace was still to come. Enraged over the fruitless war fought, survivors of the war wished for ample compensation from the warrior king. When he had nothing to offer them, they began to manipulate the dark force to attack the Borrian kingdom in an attempted coup. In an effort to stop the madness, the Borrian king gathered the legendary Pokemon Articuno, Zapdos, Moltres. Using the power of the three birds combined with the plates of Arceus, the Pokemon that shaped the universe, a prison was created for the Dark Force, sealing its power. It became a shadow of its former self. Stripped of its power, it was taken in by the king and supervised by his progeny until one fateful day. 16 years ago. Arceus, I fear my time's almost up. This Pokemon, if this next experiment goes south, it will fall right into his hand. I've told him using its power is dangerous, but without my guidance, I worry that he will settle on it as an alternative method for achieving his goal. And that's why I need to do this. It's gone. Now it's time for you to go too, Arceus. There's no point in you sticking around any longer.
Just promise me one thing. Please watch over my child. हम हो सकते हैं शायद उसके चाइल्ड, मे बी एल्सवेयर. ओह एल्सवेयर, ओके, अच्छा ओके. मतलब ये पार्टी चालू है कुछ तो. आह, हाउ कैन आई फुलफिल ग्रैम्पीज विश if I can't even catch a single Pokemon? I promised him I should finish it, but at this point, I don't see how that will even be possible. Please, Arceus, if you're real, give me a sign that everything will work out. Oh, a Pokeball? Here? Now? Arceus is real after all? Well, to be honest, वो बहता बहता वो आया होगा. वैसे तो तुम भीख मांग रहे हो एक पोकेमॉन से कि मुझे एक पोकेमॉन दो, तो ऐसा तो मिलेगा नहीं. Oh, this Pokemon. Hoopa. It appears, Grampy, that there may be a way after all. It's time for the eternal flower to bloom once more. Oh, ये कौन भाग रहा है बे? अरे बाप रे, वापस अनबाउंड. Pokemon Unbound. Welcome to the Pokemon Unbound. Before you begin playing, please be aware that this is a non-profit fan game. If you paid for this game, reclaim your money immediately. Well, to be honest, ऐसा तो मोबाइल में तो होता नहीं, पीसी में कुछ होता रहेगा तो मुझे मालूम नहीं. In the world which you are about to enter, you will embark on a grand adventure with you as the hero. The world is big place. Take your time exploring. There is no rush. Of course, अगर टाइम लिमिट कुछ नहीं है गेम का, कितने भी घंटे खेल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम फायर रेड ख़त्म किया था, तब मैं ना कैंटो का डेक्स जितने भी पोकेमॉन फायर रेड में अवेलेबल है सब पकड़े थे मैंने. फर्स्ट टाइम जब खेला था तब मेरे ख्याल से वो मेरा 67 आवर्स का गेम हुआ था. कुछ नहीं किया था मैंने, खाली अपना कैंटो रीजन एक्सप्लोर किया था, फिर सेवी आइलैंड्स पोस्ट गेम खेला था और सिर्फ डेक्स कंप्लीट कर रहा था मैं. तो वो जो पोकेमॉन फायर रेड में अवेलेबल है कैंटो रीजन के, वो सब पकड़ने और इवोल्यूशन में भी टाइम गया था, क्योंकि तब मुझे चीट बीट का कुछ मालूम नहीं था एकदम स्टार्टिंग में. तब मुझे 67 आवर्स लगे थे वो गेम ख़त्म करने को. स्पीक टू पीपल एंड चेक थिंग्स वेर एवर यू गो, बी इट टाउन्स, रोड्स और केव्स. द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल आर अलाइव. एज यू ग्रो, they will grow along with you. So keep this in mind. Your actions can affect and change the world around you. Not every decision you can make will result in the same outcome. With that in mind, you are almost ready to enter the Borrius region. But first, choose your character. अच्छा okay, दोनों से. Of course, choose your skin tone. Okay. Well, मेरा ओरिजिनल कलर सांवला है, तो मगर मुझे ना ब्लैक हेयर पसंद है. मेरे ब्लैक हेयर है, मेरे क्या कलरफुल हेयर नहीं है. ठीक है, ये ले लेते. चूज योर हेयर. ओह आई किडिंग मी, हेयर कलर भी दे रहे हो, बदतमीज. तो मैं सांवला कलर रहता ना मेरा जो ओरिजिनल है. ठीक है, चलो यही रखने दो. चूज योर आउटफिट कलर. आउटफिट आउटफिट आउटफिट. ये तो मुझे वो बिल्कुल ये लग रहा है मदर आउची. हाँ, लाल आउटफिट और काले बाल, ये रखते. इज दिस वॉट यू लुक लाइक? नो. हम सांवला कलर लेते हैं, वही ठीक रहेगा. हेयर कलर ब्लैक. अरे ब्लैक नहीं है रे इसमें अवेलेबल. चूज योर कैरेक्टर. स्किन टोन ब्लैक ही लेते हैं फिर. जी हाँ, यही कलर है और मैं यही कपड़े रखूँगा. इज दैट यू लुक लाइक? यस. लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज़ योर नेम? वेल, हम अपना यूजुअल नेम डालेंगे स्काई. और इस लेट्स प्ले से मैंने तय किया है कि अगली बार जब भी ये इस लेट्स प्ले से मतलब मेरे जो डिस्कॉर्ड फ्रेंड्स है या फिर जो आप कमेंट करते हो, किसी का भी नाम मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसको एज अ राइवल में नाम दे दूँगा. तो कोई भी हो सकता है, तो सरप्राइज मत होना. योर नेम इज स्काई. यस. चूज योर प्रेफर्ड गेम डिफिकल्टी. दिस सेटिंग इम्पैक्ट्स द डिफिकल्टी ऑफ पोकेमॉन बैटल्स. अ हाई डिफिकल्टी मीन्स स्मार्टर ट्रेनर्स एंड स्मार्टर वाइल्ड पोकेमॉन. ओके, डिफ़ॉल्ट मतलब शायद वो वही रहेगा ओरिजिनल गेम में रहता है वो. इजी मतलब एकदम इजी रहेगा, हार्ड मतलब कंप्लीट हार्ड रहेगा, और इंसेंट मतलब तो एक प्रकार का रैंडमाइजर हो जाएगा. तो मैं हार्ड तो रखूँगा नहीं, इजी भी रखूँगा. मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, जो होगा वो होगा. द गेम्स डिफिकल्टी हैज़ बीन सेट टू डिफ़ॉल्ट. दिस मे बी चेंज टू एन ईजियर सेटिंग एट एनी पॉइंट यूजिंग द ऑप्शन मेनू. The default and easy difficulties are always available. We like to play the darker version of the story. This version is much grittier than the normal version. Of course,
डार्कर वर्जन पसंद है, एनीमे भी ऐसे ही देखता हूँ मैं, तो ठीक है। दिस ऑप्शन मे नॉट बी चेंज ड्यूरिंग गेम प्ले, चलेगा। प्रेजेंट डे, ओके। अब उनके घर में हुप्पा आ चुका है, भाग के आया क्या उसके पास से? What the? 2 in 1 day? Quick, scientist. What are you standing around for? Grab him. Now knock him out and lock him up in the warehouse. Jeff is going to freak out when he hears about this. Okay, हम यहाँ पे अटक चुके हैं और हुप्पा हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He is unconscious. हुप्पा, stop. What did I tell you about traveling through my cube space? Just because you can't travel through your rings anymore, that does not give you the right to use my cube without permission. And were you the one responsible for bringing these two here? I don't know what you wanted with them, but you have been a nuisance ever since I found you on that beach 16 years ago. Oh, okay. तो वो सब पास था. I may not be your true guardian, but I am your trainer now, and you will be obey me. These two won't rescue you from me. What pain. Okay? तो शायद हम अभी अरे बाप रे, पहले से रनिंग शूज है क्या? अच्छी बात है। ये पोकेबॉल चाहिए मेरे को। क्लियरेंस लेवल 2 टू बी ओपनड, तो शायद मिलेगा नहीं। यहाँ पे केज है, क्या है इसमें? देर आर मेनी पोकेमॉन लॉक्ड अवे इन द केज। ओके ओके, यहाँ पर एक पोकेबॉल भी है, पोशन मिला मुझे। ओके, बंदे से बात करता हूँ। ही इज अनकॉन्शियस, बेटर लीव हिम क्लोन फॉर नाउ। ओह, इधर एक पोकेबॉल है। हाँ, रुको 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 रुको, पोशन एक और मिला, ठीक है। Where do you think you're going, kid? I'm under strict orders to keep you locked up. अब क्या करिए? फिर से इससे बात करें। What's this? Oh, okay. Unconscious, अभी consciousness उसे मिल आ रहा है। There's something written on his shirt. It's his name. It is. Okay. इस बार हम हमारे राइवल को नाम देंगे यांग्स, जो कि मेरा फ्रेंड है डिस्कॉर्ड का। इस लेट्स प्ले में हम उसको एज अ राइवल हमारे साथ लेके चलेंगे। अगली बार आप में से कोई होगा, मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, मगर फिर किसी का नाम मैं भूल गया तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी का भी नाम रख सकता हूँ एज अ राइवल। इज दिस नेम यांग्स? यस। हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन? वेयर एम आई? व्हाट्स गोइंग ऑन? Oh wait, you're that kid from down the road. Sky, right? Do you know what we are doing here? What? You don't know? So you must be in the same situation as I am. Have you seen any sort of exit around? There is one, but it's blocked by a man dressed in black. Take me there. I am going to try to break through. Okay, आ जाओ। ये रहा वो। Hey, who do you think you are? Do you think you can get away with keeping us locked up in here? You should better let us through right now or you are going to suffer. Back off, kid. I'm under strict orders to keep you locked up. So scram unless you want to suffer. Smart choice. Keep far away from this door and you won't regret it. It doesn't look like he is going to move, Sky. We should better look for another way out of here. Yes, there is a way. मुझे यहाँ पे मालूम है कि Pokemon है। Did you hear that, Sky? It sounded like some Pokemon are trapped in that cage over there. Let's go check it out. Okay. The lock appears fragile. Break it? Of course. The lock has been broken and the cage door is now open. Oh, Gibble, Larvitar, Beldum. Okay. It looks like these Pokemon are grateful and want to join us. If we each take one and put them in these Pokeballs I picked up, we can use them to attack the guard and escape. So, what are you waiting for? Go ahead and choose a Pokemon. Of course. तो मैं टाइप एडवांटेज के साथ जाऊंगा। अगर मैंने गिबल को चुना तो शायद वो चुनेगा लार्बिटर, और अगर मैंने लार्बिटर को चुना तो शायद वो चुनेगा बेल्डम, और मैंने बेल्डम को चुना तो वो चूज़ करेगा गिबल। अभी मुझे कैसे मालूम, मैं आपको बताता हूँ। बेल्डम होता है स्टील टाइप, गिबल है ग्राउंड टाइप, तो गिबल को एडवांटेज है इसलिए वो गिबल लेगा। अगर मैंने गिबल लिया तो वो लार्बिटर लेगा, क्योंकि अगर मैंने लार्बिटर लिया तो वो
बेल्डम लेगा क्योंकि स्टील टाइप रॉक टाइप के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, ना कि ग्राउंड टाइप के अगेंस्ट। तो ये कॉमन सेंस है, अगर मैं गिबल को चूज़ करने गया तो वो लार्विटर लेगा, तो मैं लार्विटर लूँगा क्योंकि एक एडवांटेज लार्विटर का ये है कि वो स्टार्टिंग के स्टेज में बाइट अटैक सीखता है। तो अगर उसने बेल्डम भी लिया राइवल ने तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम इजीली हरा पाएंगे क्योंकि वो पार्टली साइकिक टाइप भी है। और अगर उसने गिबल भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइट कभी कभार ओपोनेंट को फ्लिंच भी कर देता है, तो हमारा एडवांटेज वहाँ पे भी हो सकता है। विल यू टेक रॉक पोकेमॉन लार्विटर? यस, Larvitar joined Sky's party. It has the timid nature. Do you want to give a nickname to this Larvitar? Of course not. I shall take this one then. Gibble तो भाग गया. Disheartened, the Gibble left. Oh, I'm sorry. Well, वैसे दो पोकेमॉन चूज करना अलाउड नहीं, तो मैं आपको चूज करता. Now that we have our own Pokemon, let's head back to the exit. We will force our way out of here. Of course, let's go. I told you before, I'm under strict orders to keep you locked up. You don't really have a choice now. You are going to let us out or face my wrath. Quite fooling yourself. There's nothing you can do to make me let you through. Sky, let's team up and show this guy what we can do. Yes. You both are really starting to get on my nerves. Inke, Skorupi, show them why you don't mess with the shadows. Oh, क्या सिंबल है बे? कर्स मार्क, इनके एंड स्कोरूपी बेल्डम और लार्विटार के साथ जाएंगे. रॉक थ्रो में दूंगा स्कोरूपी को क्योंकि स्कोरूपी है बग टाइप और रॉक टाइप मूव इफेक्टिव है. सिर्फ मुझे पॉइजन मत करना, बाकी कुछ भी करो. मेरे कोई टारगेट को ना आराम खोर. ओह मेटल बैग. ओ भाई साहब, ये मुझे नहीं मालूम था. ओरिजिनल गेम में तो बेल्डम सिर्फ टेक डाउन रहता है जब तक वो मेटैंग नहीं होता, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं. साला इनके लर्न बाइट. I knew it was a bad idea to lock them up in here. No, my Pokemon. Not bad, Sky. You and I make a pretty good team. But I will take it from here. Let me use this potion on your Pokemon to heal it from the fight. Beldum, you take down. Beldum. Alright, I give up. I will let you through. Please, have mercy on me. Don't hurt me anymore, please. Beldum, return. I'm getting out of here now, Sky. I'm sure you are capable of taking care of yourself from here on out. If you run into any trouble, just use your Pokemon. Oh, one more thing. As soon as you get home, we are going to battle. You impressed me when we battled together, so I want to see how I will fare against you. Until then, don't tire yourself out too much. Okay? Same to you? Oh, आप battle नहीं करोगे? That guy, he just came out of nowhere. साला सबको हरा के गया Yanks. Wiped out in an instant. Okay. This guy with red hair just came out of nowhere and knocked out all of my Pokemon before I even had a chance to react. Now I can't even stop you from escaping. Okay. Grunt A. I'm really sorry, sir, but those people you asked me to guard found some Pokemon and escaped. Fool! How could you let them escape? They saw what we were doing in the lab. If they realize what we are doing and tell anyone, the international police will send a whole ethics committee after us. That could ruin our entire operation. And you think a simple apology will make everything better? No, sir, I don't, but it was just a small mistake. I promise it won't happen again. Marlon, I need you to send someone to obtain the weekly supplies from the Pokemart. Make sure they also discreetly obtain a special package that's arriving today. It's critical for our operation to capture specimen Uno. Right away. Grant? Yes, sir. Yes, sir. Anything else? Once that student has obtained that package, take it and use it to capture specimen Uno. On it. It's like a puppet. As for you, I'm going to make an example out of you. It's time to pay for your blunder. No, please. I'm really sorry. I shall do anything to fix this. Howdum, incinerate this piece of trash. That's okay. Now someone take these ashes to the lab. Let's at least make something useful of his failure. Okay? Frozen Heights. तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस पहले पार्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए. आज से ये पार्ट रोज़ 6:30 बजे प्रीमियर होगा. तो
आप एंजॉय करना। आई होप आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।